So this is the use of representative form. In this form, you scroll down to the third page, which is page 3 of 3. And if you are the only applicant, then you need to sign here above this line, which says signature of the applicant. And if you don't see a date on top of this line, then you must date it here exactly in this format, YYYY-MM-DD. And if you also have your wife in this application, then he or she needs to sign only if it is a sponsorship application. If it is not a sponsorship application, which means if it's not a permanent residence application, then they do not need to sign here. So if our team doesn't tell you to sign here, you don't need to sign here. तो ये है हमारा यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोग तीसरे पेज पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पेज 3 of 3, और आपको यहाँ पर साइन करना है इस लाइन के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। और यहाँ पर अगर आपको डेट ना दिखे तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में मेंशन करनी है, YYYY-MM-DD, मतलब कि ईयर, मंथ और डे। कभी कभी हम लोग को फॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पर दोनों स्पाउसेस ने साइन कर दिए होते हैं। तो अगर आपके स्पाउस भी आपके साथ एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो जब तक हमारी टीम आपसे ना कहे कि उन्हें भी यहाँ पर साइन करना है, तब तक वो साइन ना करें। यहाँ पर साइन सिर्फ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में किए जाते हैं, और उस केस में हम आपको बता देंगे कि आपके स्पाउस के सिग्नेचर भी यहाँ पर चाहिए हैं और उन्हें यहाँ पर डेट भी लिखनी है। अगर हमने नहीं कहा आपको, तो दैट मीन्स कि आपके स्पाउस को यहाँ पर साइन नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन करना है यहाँ पर। Additional family information form. So on this form, you need to go down to the bottom of the page, and here in section D it says signature. So you sign here, and you put the date here if there's no date already. So date would be YYYY-MM-DD. Okay, and this page doesn't need to be signed, page number 2. So yeah, there's only one signature required on this form. So ये है additional family information form. यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जगह साइन करना है, जो कि इस पेज के बॉटम पर है। यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्नेचर सेक्शन डी है ये, यहाँ पर आपको साइन करना है और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है अगर ऑलरेडी डेट ना हो। डेट इस फॉर्मेट में होगी YYYY-MM-DD। कनाडा का यही फॉर्मेट है, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डे आता है। सो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही जगह साइन करना है, सेकंड पेज पर हमें साइन नहीं करना है। This is family information form. In this form, you mostly need to sign only in one place, which is on page 2 under section D. So here you see signature. So you sign here, and if you don't see the date here, you put the date here exactly in this format, which is YYYY-MM-DD. So when do you sign more than once on this form? So here in the first section where you see signature, it says if no spouse or common law partner. So if you haven't mentioned any spouse or common law partner's name here, then you need to sign here and you need to date here. And similarly, if you haven't mentioned any children in this section here, then you would need to sign here because it says if no children are listed, then sign below. So this is where you would sign, and you would also date this form. And if these two situations they apply to you, they don't apply to you, which means you have a spouse and you have children, then you straight away go to the second page, which is here, and you just
sign here on this page. तो ये है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार आपको साइन करने होते हैं। यहाँ पर आप 2 या 3 जगह और मोस्टली एक ही जगह साइन करते हैं। सो एक जगह जो साइन होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो सबको साइन करना ही करना है सेक्शन डी में। यहाँ पर आपके साइन होंगे और यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे YYYY MM और DD के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं बाकी सिचुएशंस कौन सी होती हैं। देखिए ये सिचुएशन में यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, यानी कि अगर आपने इस सेक्शन में स्पाउस का नाम या कॉमन लॉ एंड पार्टनर का नाम नहीं लिखा है तो फिर आपको यहाँ पर भी साइन करने होंगे और यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी। और अगर आपने यहाँ पर चिल्ड्रन वाले सेक्शन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपके अभी बच्चे नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर साइन करना होगा सिग्नेचर एंड यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी होगी। सो इट सेज इफ़ नो चिल्ड्रन लिस्टेड। अगर आपके स्पाउस भी हैं और बच्चे भी हैं तो आपको इन दोनों जगह पर साइन ना करके सिर्फ तीसरी जगह यहाँ पर साइन करना है, सिर्फ एक ही साइन करना है। Family information form. In this form, you need to sign in 3 places. You may need to sign in 3 places. Mostly people sign only in one place, which is section C. Here you see signature, so you sign here and you put the date here if there's no date. In this format, you need to mention the date YYYYMMDD. Now let's look at the other 2 sections where you may have to sign. So this one says, note 1, if no spouse or common law partner, then you need to sign here, which means if you haven't mentioned the name of your spouse or common law partner, which means if you're not married, then you would need to sign here and you would need to date here. Now, if you're not married, and then it's most likely that you do not have children also, so this situation will also not apply to you. This says, if no children, then you need to sign. So if you have signed here, most likely you will need to sign here also. Okay, and then you would also need to put the dates here if you do not see the dates here already. Family information form. इस फॉर्म में आपको 3 जगह साइन करना पड़ सकता है। एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। यहाँ पर तो हर किसी को साइन करना होता है। सेक्शन सी सिग्नेचर, यहाँ पर आपको साइन करना है और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। अगर आपको डेट ना दिखाई दे, डेट आपको ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो आइए देखते हैं दूसरे सेक्शंस कौन से हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको साइन ना करना पड़े। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ नो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर साइन करना है। अगर यहाँ पर आपने किसी का नाम नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर साइन करना है और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। सिमिलरली अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अभी आप शादीशुदा नहीं हैं, तो जायज़ सी बात है कि आपके बच्चे नहीं हैं अभी, और अगर शादीशुदा हैं और अभी बच्चे नहीं हैं आपके, तब आपको यहाँ पर साइन करना है। इफ़ नो चिल्ड्रन आर लिस्टेड, यहाँ पर आप साइन करेंगे और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। दैट्स दैट।